Halo, halo. Saya ini kita. Lupa tadi. Lalu? Nah, itu. Tahu. Bukan. अच्छा हो मिल गए भाई मेरी बात में और कौन आ गया वो पैसा तो दे दिया मैंने अच्छा तो वहाँ पे फिर एक एक बंदा तो फिर इस तरह बैकग्राउंड नहीं करता ना अच्छा अच्छा तब ठीक है कार तो क्या मतलब लेकर
Hello, hello, hello. We are going to start our session shortly. Hello, hello. Audible? Yes, audible. Yes, audible. Thank you. We are going to start our session shortly. Hello, we are going to start our session shortly. Uh, hello, hello. Audible? Yes, audible. Yes, audible. Thank you. We are going to start our session shortly. Hello, we are going to start our session shortly. Uh, hello, hello. Audible? Yes, audible. Yes, audible. Thank you. We are going to start our session shortly. Hello, we are going to start our session shortly. Uh, hello, hello. Audible? Yes, audible. Yes, audible. Thank you. We are going to start our session shortly. Hello, hello. We are going to start our session shortly. Hello, 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 hello. Audible?
Hello. I would like to request all our virtual participants to keep their video off. Hello. I would like to request all the virtual participants to keep their audio in mute condition and to keep the video off. Yes, sir. Hello. Good morning. Our esteemed guests have arrived today. Namaskar. A warm welcome to all of you in this inaugural session of 5-day long FGP Come National Workshop. This workshop is a joint collaboration in between Faculty Development Center of Central Sanskrit University, Akulaba campus, and Department of History, Holy Cross College, Tripura. In this inaugural session, we feel privileged to have Professor Satyadev Puddar, sir, Honorable Vice Chancellor of Maharaja Bir Bikram University, Tripura, as our chief guest. Along with him, we have with us Dr. Father Benny K. John C., Principal, Holy Cross College, as our guest of honor. Along with him, this session will be presided over by Professor Prabhat Kumar Mahapatra, Director of Central Sanskrit University, Akulaba campus. Along with him as resource person through virtual platform, Professor P.V.V. Subramaniam, respected Director of Central Sanskrit University, Raghunath Kirti campus, Uttarakhand, has joined. I would like to request our esteemed guests to inaugurate the session with lighting the ceremonial lamp. And I would like to request Dr. Prakash Ranjan Mishra for Vedic incantation along with. Please, we would like to request our esteemed guests to initiate the session, lightening the ceremonial lamp. हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत नमस्ते रुद्रमन्याव ऊतो त एकावे नमः बाहुभ्यामुते नमः हरेः ॐ Thank you very much. Now, in continuation, we would like to initiate our program with the felicitation event of the guests. In this connection, I would like to request our director, sir, to felicitate our chief guest, Professor Satyadev Puddar, sir, Honorable Vice Chancellor of MBB University. Volunteers, please.
Thank you very much, sir. I would like to request Professor Avadesh Kumar Chaubey, Head of the Department of Buddha Darshan, to felicitate our guest of honor, Dr. Father Benny K. John, CSC, Principal, Holy Cross College. Thank you, sir. I would like to request Dr. Prakash Ranjan Mishra, sir, Assistant Professor with Department, to felicitate our Director, sir, and Chairperson of this session, Professor Prabhat Kumar Mahapatra. Thank you, sir. This academic event is an intellectual rendezvous for all the faculty members of both the institutions, Central Sanskrit University Akulaba campus, as well as for Holy Cross College, Tripura. In continuation, I would like to request for a welcome address Ms. Smita Devnath, Assistant Professor, History, Holy Cross College, Tripura. Ma'am. A very good morning and hearty welcome to our chief guest for today's program, Professor Satyadev Poddar, Honorable Vice Chancellor, Maharaja Bir Vikram University, well-known historian who does not need any introduction. The guest of honor, Dr. Father Benny K. John, CSC, Principal, Holy Cross College, Agartala, who is committed to spread of education. The resource person, Professor P.V.B. Subramaniam, Director, CHU, Raghunath Kirti Campus, renowned Sanskrit scholar and astrologer. The chairperson of 5-day faculty development program come workshop, national workshop, Professor Prabhat Kumar Mahapatra, respected director, CHU, Ekalabba campus, a philosopher, astrologer, and eminent Sanskrit scholar. Session coordinator, Dr. Suman Acharji, assistant professor, CHU, Ekalabba campus. Professors, associate professors, assistant professors, research scholars, students, ladies and gentlemen. It is with great pleasure and excitement that I extend a warm welcome to each and every one of you to this 5-day faculty development program come national workshop on strategies for assimilation of indigenous knowledge system with the modern education system. The workshop is hosted by the Central Sanskrit University, Ekalabba campus, Agartala, in collaboration with the esteemed Department of History at Holy Cross College, Agartala. In this event stands as a testament to our collective commitment to fostering innovation and inclusivity in education. In today's rapidly evolving world, the integration of traditional wisdom with contemporary pedagogies hold immense significance. As we gather here, scholars, educators, and practitioners from diverse backgrounds, we embarked on a journey to explore strategies that bridge the gap between indigenous knowledge systems and the modern education paradigm. This workshop is expected to serve as a platform for exchange, dialogue, and collaboration aimed to enriching our educational landscape and empowering future generation with a holistic understanding of the world. Over the time, of course, next 5 days,
we are going to engage in enriching discussion, insightful presentations, and interactive sessions led by experts in the field. Together, we will delve into the intricacies of assimilating indigenous wisdom into our educational frameworks, recognizing its cultural significance and harnessing its potential to nurture well-rounded individuals equipped to address the challenges of the 21st century. As we embark on the intellectual voyage, let us embrace diversity, open-mindedness, and the spirit of inquiry. May this workshop ignite new ideas, forge lasting partnerships, and inspire transformative action in the respective spheres of influence. Once again, I extend my heartfelt welcome to all the participants, speakers, organizers, and let us embark on this journey together with enthusiasm and dedication towards a more inclusive and enlightened educational landscape. Thank you. Thank you. A warm welcome to ma'am also, Ms. Smita Debnath, on behalf of Central Sanskrit University, Agalubba campus, as the coordinator from the side of Holy Cross College. Thank you, ma'am. Now, in continuation, realizing the busy schedule of our chief guest, we have actually kept the address of our chief guest at the initial time slot. So I would like to request Honorable Vice Chancellor of MBB University Tripura, Professor Satyadeo Poddar sir, for his words of suggestions and blessings. Good morning to everyone. Respected Director, Central Sanskrit University, Club Campus, Professor Professor Prabhat Mahapatra, our guest of honor, Dr. Father Benny K. John, CSC Principal, Holy Cross College, resource person, Professor P.V.B. Surmanyam, Director, Central Sanskrit University, Uttarakhand, the students, faculties from Holy Cross College and Central Sanskrit University, a club campus, my dear students, ladies and gentlemen. At the very outset, I extend to the organizer, the Central Sanskrit University, a club campus and Holy Cross College, for choosing a very beautiful topic, which states that a strategy for assimilation of IKS with modern education system, very relevant for the students, for the teachers, and for anyone who have a sense of change in their entire strategy for running the education. Holy Cross College stands for certainly modern education system. Once the one side of the road and the another side, we have another university, the Central Sanskrit University, a club campus. It stands for, the announcer was talking about indigenous knowledge system. I call it Indian knowledge system. The knowledge which stands for Indianity, the knowledge which stands for originality, the knowledge which stands from the beginning from where we stand for, and that is indigenous, that is Indian, that is Sanatan also. We cannot ignore the fact that Sanatan is indigenous.
When we talk about Sanatani Parampara, it is a indigenous Parampara, the beginning tradition and custom that was there, and that is there in the tribal life, and that is there, that was there in the Sanatani Parampara. So here, when we talk about indigenous knowledge system, we mean by Sanatani Parampara, the Indian knowledge system, right? Am I wrong? Certainly, the strategies for assimilation, the word assimilation, again, I defer to the very idea it has been imputed here. The assimilation is a complete, the merging of the idea. It is an extreme form of, the mixing together of the indigenous knowledge system. If that is there, it is good that the seminar is intending for. But certainly, if you can make, even for integration also, if you can take the best part of the IKS, that will be the success of the seminar. That is my submission. But the question is, assimilation is the, the final stage of the merging together. When the milk mixes with the water, the milk is not found visually, it becomes loses the identity, and that assimilation is like that. Integration is more important. We take the better part which serves our purpose. So when you talk about IKS, Indigenous Knowledge System or Indian Knowledge System, today the seminar intends for a kind of change that has taken place recently by introducing National Education Policy in 2020. The modern education system was introduced in India when the British came to India. It was a Macaulay education, from where we mean by modern education. Before that, the education that was going on in India, it was based on Gurukul system. So if you look into the change that took place in Indian education system, the arrival of British with the introduction of Macaulayan education made a change from indigenous knowledge system to modern education system. So from 1833 to onwards to 2020, if you look into the entire landscape, the Indian education system is based largely on modern education system, where the impact of imperial thought, the impact of modern development, impact of modern technology cannot be ignored in the course curriculum, in the implementation, in the structure of the education system that we had before independence and we are carrying even after independence. So the very motive today, the Holy Cross College and the Club campus has thought, let us take some strategy. हम कुछ ऐसा strategy बनाएं कि हम पुरानी परंपरा को हम modern education में introduce करें. एक नई सोच, the new thought the Holy Cross has evolved, कि let us go back. Now they are thinking, let us take some view. Rather, I am very much happy you are talking about assimilation of the indigenous knowledge system, a very new enlightenment that the Holy Cross College, but again, the two Club campus. Club campus is a beacon, the light of the lamp, where the Sanatani Parampara they are giving to everyone. But again, the Holy Cross College has to learn many things from the Club campus in true sense of the term. When you talk about the assimilation of the Indian knowledge system, because the two, the East and the West, the Eastern thought and the Western thought, the road divides the two institutions, the Club campus and the Holy Cross College. Now, so I'm very much happy when such kind of synthesis, such kind of way, the two principal director and the principal, they are with us. And they are taking a kind of dialogue, a time of a seminar they have arranged to let us sit together and let us share our thought so that the students, the faculties, they can be molded
in a right direction, because in a society where we live together, certainly the ideological assimilation, the ideological dialogue and discussion that must go on, otherwise sense of isolation will prevail, and this sense of isolation will lead to conflict, and when the conflict starts, we've lost the game of cohesion, we lost the goal of the final objective the education stands for. And modern education system, when they defined their goal and objective, their goal and objective states that they want development, they want progress, they want happiness in the entire human being, right? But when a club campus defined only the objective of education, their objective goes beyond that. Their objective of imparting education also not simply providing the happiness, the providing the good well-being of the people. They think that इस happiness के बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी मुक्ति कैसे मिलेगी, तुम्हारा दायित्व क्या है, what is the goal that you have, even if you are a rich person, you are a knowledgeable person, what hell you have done for the society, what is your, just you think you have everything and assess yourself for the last 50 years or 60 years what you have given to the society. The values that is inculcated in the club campus, and that values, you know, is based on the very system, the knowledge, the indigenous knowledge, the very हमारी जो ज्ञान परंपरा है, जो old age है, they inherit that value system that imparts that the education, the goal of education is not the goal of education Holy Cross College stands for. The goal of Sanatani Parampara is the education is that हम जो काम करते हैं, whatever the work, साप विद्या या विमुक्ति, आप कामों से बंधन से मुक्त होते हैं, लेकिन विद्या वही है, लर्निंग वही है, नॉलेज वही है, जिससे आप मुक्त होते हैं उन चीजों से जो आपको विभिन्न रूप से ग्रसित किए हुए हैं। जब आप एक स्टेज में चला जाते हैं जहां पर आपका एक ब्लिस होता है, आप जो मुक्ति है, मुक्ति का मार्ग देता है, और मुक्ति के मार्ग को स्पिरिचुअल लेवल पर यहाँ डिफाइन किया गया है। यह जो मुक्ति का मार्ग है हमारे एकलव्य कैंपस का उद्देश्य है, जबकि होली क्रॉस कॉलेज का उद्देश्य है एक शिक्षा के जरिए एक हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ के बाद मुक्ति की लाइफ शुरू होती है। मुक्ति बहुत हाई स्टेज की चीज है। सो दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव, सा विद्या या विमुक्ति, हमारे होली क्रॉस कहता है, लेकिन जब एक हैप्पी लाइफ की बात करता है, एक प्रॉस्परस लाइफ की बात करता है, तो हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। इस बीच की जो दूरी है, मैं इस इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम के थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको दे देता हूं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडियन यूनियन के प्रधान जी, उन्होंने एक किताब का कुछ दिन पहले विमोचन किया था। वह इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। मैं समझता हूं कि यहाँ के जितने फैकल्टीज हैं उनको पढ़ना चाहिए। दे शुड रीड the book launched by the government of India, Introduction of Indian Knowledge System. It is written by Professor B. Prabhakaran, B. Vasudevan something, from the Indian Institute of Management, Bangalore. And the name of book is The Introduction to Indian Knowledge System, Application and Concept. In that book, the Indian knowledge system has been defined, a kind of knowledge which consists of traditional cultures, the knowledge of traditional culture, and that traditional culture has evolved in the passage of thousands of years. So the knowledge system which has evolved from different culture, and if you look into the different culture from thousands of years has evolved in different time span. And if you look into the history of the different time span of any culture of the world, we find that in the canvas of historical discourse, we have Sumerian culture, the oldest culture, and the Greek culture, the oldest culture. But again, then we have, when you talk about Indian culture, and when you talk about
the Vedic culture, where the Indian culture starts, you will find that the entire gamut of, the civilization, the very philosophy that evolved in the East and the West, in the Holy Cross College, it does not stand for the college. If you stand for the modern educational values and the club campus, we find that there are two thought of school you have to look into. If you look into the changes of the knowledge system that evolved throughout the history, and in that way, they believe in two theories. The Sanatan theory, the Holy Cross College stands for the entire education system based on the linear theory. And this Sanatani Parampara, they stands and they are based on the cyclic theory. This cyclic theory and the linear theory will make you clear what is the evolution of the culture that we have. And this cyclic theory talks about, we believe, the entire Indian Sanatana Parampara. If you look into, if you can judge the Sanatani Parampara development of culture, the development of knowledge system, we believe that this knowledge system has evolved with the passage of time in a progressive way. We believe that there was a system. The linear theories talks about is a evolutionary theory. They go from bad to worse. They go from zero to up. They are always, in a progression. But in the cyclic theory, it states that there was no bad in my culture. We have started our culture with a golden way. So our culture, our parampara starts from Satjug. That was good. We did not start from worse. We did not from zero. We have started with a golden age. And that is the basic difference if you have to make a differentiation between East and West. If you make a differentiation between linear and the cyclic theory, if you make a differentiation between, the Orientalism and Occidentalism, you will find that the education system that evolved with the passage of, the ideological understanding we have with us in Sanatani Parampara and the theory that they have. And in the linear theory, they believe that the philosopher that has come will find that the education has been molded. You are nothing but education system. We have made you civilized. The civilizational growth, the Thai, the education, the English, the kind of progress they say you are naked. We have made you civilized. That is the linear theory. But again, the cyclic theory talks about our culture. Culture was not so bad. If you look into the Indian culture, which is very old, the Sanskrit scholar is there. Our Buddhist Chaubeji is here. I will talk about from how the Vedic to Chaubeji has come. It is a gradual, the discourse, from Ved, we have come to Puran and Upanishad, and then the Jain and the Buddha. The gradual knowledge has always enriched our culture. It is a big journey. The two Parampara people here, the Chaubeji is there and our Mahapatra is there. They are the pillar of the two stages of the development of the Indian knowledge system. Both are, our valuable asset of Sanatani Parampara, and we cannot separate each other. But when you talk about, the Satyug, when we find that the aim of what life was in Satyug, that was my pre-time Vedic period. हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी नारियां बैठी हुई हैं. Any society, if you look into the society's position, the prosperity, the love, the society, just how women are there in their society. जिस समाज में women अच्छी है, उसका पोजीशन अच्छा है. आज women के बारे में हम सोचते हैं कि तो मुझे आश्चर्य होता है कि women 7 साल की बच्ची का भी रेप हो जाता है. कितना गंदा समाज और कितनी खराब समय आ गया है. लेकिन एक समय हुआ करता था, सतयुग का समय. सतयुग में नारी का जो पोजीशन था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता. वो उस घर में देवता आते ही नहीं थे जहां पर नारी की पूजा नहीं होती थी. दैट वाज द टाइम द वुमेन पोजीशन वाज सबलाइम. हमने उस स्टेज में से हमने नारी को देखा है जहां नारी की हम पूजा करते थे. भगवान से ऊपर उनको हम पूजा देते थे, और उसी नारी के साथ हम आज गलत व्यवहार करते हैं. दैट वाज माय सतयुग.
उस युग में हम जब एजुकेशन की बात करते हैं उस युग में, तब हम कहते हैं कि सात विद्या, यह विद्या हमें न केवल भोजन की व्यवस्था करेगी, ना केवल जो रोजगार देगी, ना हैप्पीनेस देगी, हमको इस जीवन से एक ऐसे ब्लिस में ले जाएगी जहां पर आदमी अपने को मुक्त करता है। इस विद्या के जरिए हम सारी जो व्यवहारिक समस्या है उसको तो दूर करेंगे ही, हमको भोजन भी देगी, हमको अच्छी लाइफ भी देगी, बट इस लाइफ के बाद व्हाट आफ्टर नेक्स्ट, उस लाइफ की परिकल्पना करती है। दैट इज माई अध्यात्म, दैट इज माई स्पिरिचुअल थर्स्ट। हमारी वह विद्या थी, सात विद्या यह विमुक्ति है, हम वहां से शुरुआत की थी विद्या को, लेकिन यह सतयुग का विद्या था। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव कम टू द त्रेता युग, वी हैव कम टू द्वापर, एंड आज जिस युग में आप हो, जिस युग में हम सब हैं, वह कलयुग है। यह मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कलयुग का एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन हमारी सनातनी परंपरा उस सतयुग की परंपरा है। जब हम एजुकेशनल बात करते हैं, जब वैदिक एजुकेशन की चर्चा करेंगे, आज जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम की चर्चा करेंगे, यह आज की नहीं है, वह उस युग की नॉलेज सिस्टम की चर्चा करेंगे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम हमारी प्राचीन परंपरा में थी। That was there during the Satyug, that was there during the Vedic period, and with the passage of time we have forgotten, we have lost that system. 2020 के बाद हमारे सरकार को ध्यान खुली है कि भाई चलो हम लोग पीछे की तरफ चलें। यह शिक्षा जो मॉडर्न एजुकेशन है वह तो बहुत तरह का गंदगी फैला रही है, लोगों को जॉब नहीं मिलता है, पेट नहीं चलता है, इट इज इनकम्प्लीट एजुकेशन। वह एजुकेशन एक कंप्लीट एजुकेशन था, एक व्यक्तित्व का निर्माण करती थी, अपने आप में टोटलिटी की निर्माण करती थी। ज्ञान का एक आधार नहीं था, ज्ञान द नॉलेज, व्हेन यू टॉक अबाउट आज जो नॉलेज कहते हैं, यह नॉलेज हमारे अंग्रेजी वोकेबलरी है, लेकिन वहां पर ज्ञान था, और ज्ञान नॉलेज नहीं होता है सर, नॉलेज इज नॉट इक्विवेलेंट टू ज्ञान। हमारे ज्ञान उससे ऊपर का शब्द है। जब हम कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, तो उसका ट्रांसलेशन हम करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, लेकिन भारत की जो ज्ञान है वहां पर दर्शन है, वहां पर सांस्कृतिक धरोहर है, वहां पर वैल्यू सिस्टम है सर। एंड दैट यू हैव टू, when you talk about Indian knowledge system, the indigenous knowledge system, you have to look into what you have to incorporate in the modern education system, what you have to take from that education system. उस परंपरा से हम क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे। हम एसिमिलेशन की बात नहीं करते हैं। मुझे तमाम टीचर से इतना ही रिक्वेस्ट है कि they can integrate some good values of our indigenous knowledge system, that will be the great effort of everyone. Let us make the syllabus of modern education system based on indigenous knowledge system, so that the many problems our society today is facing, whether they are east or the west, ये जो कलयुग है यह सबके लिए चुनौती है। कोई भी शांत नहीं है, इंडिया में भी कोई शांत नहीं है और ब्रिटेन में भी कोई शांत नहीं है। सबके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। दे हैव एवरीथिंग बट दे हैव नथिंग, दे आर लिविंग इन ए पैराडिज्म ऑफ द hollowness. सब कुछ होते हुए भी they have no peace, they are searching for the peace. ये peace कहां से आएगी? हैप्पीनेस की खोज में वह यहां से वहां भटकते हैं। This knowledge system, indigenous knowledge system, if that is introduced in the syllabus, we can feel that development will lead to the happiness, and that happiness will be the blissful. I am using the word bliss, not happiness. That is more sublime than the happiness, that is more higher than the development, the material development. But the question, मैं कुछ थोड़ा सा glimpses देके जाऊंगा यहाँ से, कि जो लोग यहाँ पर संस्कृत से हैं, कि यहाँ पढ़ाई होती है, संस्कृत में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। होली क्रॉस के बच्चे थोड़ा देर के लिए इस कैंपस में आ जाएं, तो उनको जो लोग चाहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के जरिए हम बहुत सारे समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं, तो संस्कृत वालों को भी उधर जाने की जरूरत है। उन्हें भी होली क्रॉस जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी है, वहां पर मॉडर्न डेवलपमेंट है, वहां पर रैशनलिज्म है, उसको भी हम लेंगे। लेकिन वहां के लोगों को यहाँ भी आना पड़ेगा, जहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर मैं आपको दे के जाऊंगा। व्हाट द होली क्रॉस हैज टू लर्न फ्रॉम ए क्लब कैंपस, द इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम। यहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई होती है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, उन्हें मैं पूरी चुनौती देता हूं कि संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज इन द एंटायर वर्ल्ड व्हिच गिव्स द बेटर वे टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर।
Tomorrow world is the world of information and technology. Tomorrow world is being governed by the artificial intelligence. How artificial intelligence will be run? It will be run by the the club campus, जहां पर संस्कृत की पढ़ाई होती है, जहां पर संस्कृत जो लिंग्विस्टिक कंप्यूटेशन है, जहां पर 0 और 1 से कंप्यूटर चलती है, 0 और 1 की जो पूरी प्रक्रिया संस्कृत के ग्रामर से आपको सीखनी पड़ेगी. Only language in the entire world which can help you to understand the language of the computer. Agar tomorrow is the world of artificial intelligence, it is the Sanskrit which is going to help you, because the grammar of Sanskrit is the guidance for running the artificial intelligence. So the assimilation of Sanskrit grammar in the knowledge system, in the course and curriculum of the Holy Cross, is a binding factor for those students who wanted to opt the career of the computer, the IT. This development process, the industrial development, management. We talk about management. मेरे management के यहाँ पर faculty बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ. If you wanted to teach management in modern education system, you have to run Srimad Bhagavad Gita, the best piece of the how things are managed in the society. हम management Indian knowledge system में जहाँ पर हम देते सारी management हो जाएगी. वह management क्या है? What is the management? You manage schools and colleges. I'm talking about the management starts for running up. How to know yourself? पहले आप अपने को तो जानिए. Know yourself. If you can manage your life, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आपको संस्कृत में पढ़नी पड़ेगी. हमारे सनातन परंपरा, आप सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हो, परेशान हो, लेकिन आपकी दिनचर्या का सही गाइडेंस क्या होना चाहिए? सुबह उठे तो क्या करना चाहिए? सुबह उठे, जींस पहने और यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़ गए, क्योंकि नहीं जाएंगे तो फादर की घंटी बज जाएगी. नो, यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज बिफोर यू स्टार्ट द मॉर्निंग शिफ्ट. मॉर्निंग शिफ्ट के पहले आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफ का जहां पर शुरुआत होती है, जहां पर आप सुबह उठते हो, तो आपको होली क्रॉस दिखाई पड़ता है, आपको यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ती है, आपके माँ बाप दिखाई नहीं पड़ते जो आपके घर में ही बहुत बड़े गुरु हैं, उनको आप प्रणाम नहीं करते हैं. आपके घर के जो बहुत सारे जो सोर्स ऑफ नॉलेज हैं उसको आप याद नहीं करते हैं. याद करते हैं उसे जिससे आप डरे हुए हैं, जो आपको डराता है सपने में भी कि वहां पर अगर नहीं गए तो हमारी छुट्टी कट जाएगी. That is the the lapses that we have in the entire दिनचर्या. हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुबह से शाम तक आदमी कैसे काम करना चाहिए? हमारी सनातनी परंपरा में इसका वेल डिफाइंड, वेल नॉलेजेबल और वेल थॉट एंड बेस्ड ऑन रेशनैलिटी. आई डोंट शो. आप लोग पढ़ के देख लीजिए. अगर आपने अपनी दिनचर्या को ठीक कर लिया तो आपकी जीवन की पद्धति, जीवन की शैली शुरू हो जाएगी. हर आदमी परिवार बसाना चाहता है, पति से पत्नी की दूरी और फिर बच्चे और फिर वह बाप और प्रोफेसर बनता है. यह जो एक व्यक्ति का जो परिवार, समाज और राष्ट्र की जो पूरी प्रक्रिया है, हम कहते हैं कि यह परिवार का प्रबंधन, समाज का परिवर्तन प्रबंधन और राष्ट्र का प्रबंधन, इसका अगर मैनेजमेंट सीखना है तो आपको सनातनी व्यवस्था में सीखनी पड़ेगी. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सर, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, नाम आप लोग लिख लीजिए, एंगस मैडिसन, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, उनकी एक किताब आई है कुछ दिन पहले, और उसकी अगर कोई इंडियन होता तो आप लोगों को थोड़ा संदेह होता. अंग्रेज इकोनॉमिस्ट है, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है. उस किताब की जो मुख्य बातें हैं मैं बताना चाहता हूं, और वहां पर हम अपने सनातनी परंपरा पर गर्व करते हैं कि भारत अगर कृषि प्रधान देश है, अगर कृषि हमारी इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इज माय इकोनॉमी which has given the larger scope for our sustenance. हमने एक अच्छे रामराज की कल्पना करते हैं, अभी करते हैं. पहले रामराज था हमारे सतयुग में, लोग भूखे नहीं मरते थे, इतना था कि लोग जिंदा रहते, क्योंकि हमारी कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी थी. हम कृषि व्यवस्था इतनी उन्नत थी, कहा जाता है कि 0 से लेकर 15th सेंचुरी तक के पूरे इतिहास को देख लें तो इंडिया एकमात्र देश पूरे विश्व में है. अगेन उस इकोनॉमिस्ट के शब्दों में मैं कह रहा हूं, ये मेरा पोताल का शब्द नहीं है. He states that the India has contributed to the entire world 24% GDP. The 24% we have contributed to the entire world.
ये हमारी 15th सेंचुरी की आर्थिक व्यवस्था थी, इसलिए हमारी कृषि हमारे सनातनी परंपरा पर निर्धारित थी। यस, इंग्लिश मेडिसिन जैसा पानी दे देंगे। तो हमारी कृषि व्यवस्था का आधार जो था वह सनातन था। हम जब खेती करते थे तो अचानक आज टमाटर का मौसम है, वहां पर हम गेहूं नहीं लगाते थे। इट वॉज बेस्ड ऑन द मॉनसून, द क्लाइमेट, द क्लाइमेटिक बेस्ड। पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अब सो द कृषि व्यवस्था हमारी जो एक ये आपकी पहली वीडियो हो गई। दूसरी वीडियो शुरू करने से पहले आप पॉज करेंगे और इस वीडियो के बारे में आपको सिर्फ इतना ही 2 ही सेंटेंस बोलना है कि आपने एक्चुअली ईवीएम मशीन को कॉलिंग प्रोसेस में कैसे इस्तेमाल करना है और ईवीएम मशीन के साथ क्या क्या करना है, ये आपने अभी देखा है। इसको हम आगे भी दिखाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिटरेचर में है जिसको आपने चाहते modern education, it talks about industrial development, but I do believe that agriculture is the root of India. Unless you change the agricultural growth, you cannot give many things without food. आज किसान भूखा कहता है कि हम अन्नदाता हैं, और वह अन्नदाता का कंसेप्ट हमको सनातनी परंपरा से लेनी पड़ेगी। किस मौसम में क्या उपजाएं, कितने बजे उपजाएं, इसके सारे जो स्टोरीज है हमारे सनातनी किताबों में लिखे हुए हैं। मॉर्निंग में बीज का सिंचन होना चाहिए, ये नहीं कि नींद खुलती है मेरी 8 बजे और फील्ड में जाते हैं 10 बजे। ये ऐसा नहीं है सर। सनातनी परंपरा में खास पैदावार के लिए टाइम दिया गया है। उसी समय आपको उसको पैदाइश करनी पड़ेगी, उसको बोना पड़ेगा, तब उसका जो उत्पादन होगा वह बहुत ज्यादा होगा। That was the theory. When our farmers have used that theory, they have given the maximum production, and we have contributed highest GDP to the entire world. That was our कृषि संस्कृति। That कृषि संस्कृति जो बेस्ट पार्ट है, मैं चाहता हूं कि कोर्स करिकुलम में जो एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट हैं निश्चित ही वहां से चुरा ले उन चीजों को। कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बातें को लेने में। अगर अच्छी बात लेंगे तो हमारी जो समस्या है भोजन की एकदम दूर हो जाएगी। जो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, शिल्प की बात करते हैं, जिसके कारण कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जहां पर हम इंडस्ट्रियलाइज हमारी शिल्प की जो सिस्टम है, अगर हम सनातनी शिल्प की बात करते हैं, पर्टिकुलरली द मेडिसिन आई एम टॉकिंग अबाउट, द our nature was the source of medicine, and so far the Ayurveda, I do believe आप आयुर्वेदिक साइंस को, जो हमारे मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं, थोड़ा सा उसमें आपने घुसा दीजिए तो मैं समझता हूं कि आदमी की अधिकांश जो बीमारी है उसको इलाज के लिए अधिक पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्यू टू लॉट ऑफ मनी वी डाई बिकॉज we have lost that herbal practices, the medicinal practices that we had in our system. Let our medicinal practices should be based on the Sanatani practices. If that can be taken in the syllabus, the medical पढ़ने वालों लोगों के लिए एक अच्छी चुनौती है। जो लोग साइंस के विद्यार्थी, मैथमेटिक्स के यहाँ कोई विद्यार्थी हैं, तो उन्हें तो मैं पूरी बात कहता हूँ कि अगर हमारी जो वैदिक मैथमेटिक्स है, बड़ी बड़ी संख्या, एक कमला कोई थी साउथ इंडिया की, उसको कोई भी डिजिट दीजिए, कोई भी, मैंने गुरुकुल के बच्चों से मिलने का मुझे अवसर मिला है सर, एंड आई डू बिलीव जब तक आप मिलेंगे नहीं गुरुकुल के बच्चों से, आपको ज्ञान नहीं होगा कि उनकी मैथमेटिक्स और होली क्रॉस में पढ़ने वाले मैथमेटिक्स से क्या अंतर है। दोनों को एक साथ बैठा दीजिए और दोनों से शास्त्रार्थ कर लीजिए, दोनों को कोई समस्या दीजिए, जो आंसर पहले देगा वो अच्छा स्कूल एजुकेशन है। Yeah, difference, it is based on how the mathematical computation of mathematics that is practiced in the Gurukul system. Because the formula, the guidance, how the mathematics is taught in the Gurukula, that you have to imbibe. अगर उसकी थोड़ी सी पद्धति हम अगर यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में लें, तो जो लोग बैंक और LIC की तैयारी करना चाहता है, जहां पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन,
में टाइम लगता है, मैं समझता हूँ चुटकी बजाने में जितना टाइम लगता है उतने में आप बड़ी बड़ी संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत तरह चीज कर सकते हैं अगर आप उस मैथमेटिकल नॉलेज सिस्टम की तरफ चले जाएं। ये सब कुछ है, बस वहां से एसिमुलेट करना है उस इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को। ये सारी चीजें अगर हम अपने कोर्स करिकुलम में हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर की चर्चा इसलिए करूंगा, जो अंग्रेजी की तरफ फैंसी महसूस करते हैं अंग्रेजी पढ़ने के बाद, they feel they are so modern, they feel they are so high off. I do challenge that. Yes, अंग्रेजी has given you modernization, but knowledge, जो मॉडर्नाइजेशन जो है आपको अगर ज्ञान नहीं देता है, दर्शन नहीं देता है, तो निश्चित ही आपका ज्ञान अधूरा है। एंड इन दैट वे द लैंग्वेज एंड लिटरेचर दैट वी हैव in the entire, the Sanatani parampara, knowledge of Sanskrit is most important. संस्कृत के साथ साथ हमारी जो नॉलेज की प्रवाह जहां ज्ञान की रही है, हमने संस्कृत को, प्राकृत को, पाली को, अपभ्रंश को, हमारी जो साउथ की जो संगम एज की पूरे कर्नाटिक लैंग्वेज और लिटरेचर रहे हैं, इस पूरे वर्ल्ड को लिटरेचर के जो ज्ञान है, लिटरेचर में विज्ञान है, लिटरेचर में वह आचार संहिता है जो आपको एक सुखद जिंदगी, नॉलेज के साथ साथ हाउ यू कैन लिव ए बेटर लाइफ, दिस लिटरेचर कैन गिव यू। लिटरेचर का विज्ञान, लिटरेचर का जो वैल्यू सिस्टम है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। लिटरेचर और लैंग्वेज हमारी परंपरा का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मंदिर, मैं अगेन कहता हूं कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो सदियों से हमारे पास चले आ रहे हैं, चाहे ईस्ट के हैं वेस्ट, दे आर नॉट सिंपली द टेम्पल्स, दे आर नॉट सिंपली द मॉन्यूमेंट्स। उस मॉन्यूमेंट्स में हमारी इकोनॉमी रखी हुई है, उसमें हमारा एस्थेटिक सेंस है। जो लोग एस्थेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, जो फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं, सांख्य दर्शन की बात करूंगा, सांख्य दर्शन और छंद शास्त्र के बिना आपका ज्ञान अधूरा है। इसको भी आपको सीखने की जरूरत है। मैं वैल्यू सिस्टम की बात करके अपनी बातों को विराम दूंगा, क्योंकि हम वह एजुकेशन को बेस्ट एजुकेशन मानते हैं। मॉडर्न एजुकेशन में जो अच्छाई है, जो वैल्यूज है, हम दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। क्रिश्चियनिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम वी रेस्पेक्ट अदर्स। ये जो रेस्पेक्ट अदर्स है, ये हमारी वैदिक परंपरा है, ये दोनों में कॉमन है सर। एंड ये जो रेस्पेक्ट फॉर अदर है, ये हमारा यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम है। हम त्याग में विश्वास करते हैं, लेकिन वो वेस्टर्न त्याग में नहीं। हम सेक्रीफाइस करके दूसरे को कुछ प्यार मोहब्बत देना चाहते हैं, दूसरे पर गभर नहीं करना चाहते हैं। हमारी परंपरा कभी एग्रेशन की नहीं है, हम सत्य और अहिंसा में विश्वास करते हैं। हम, यह जो हमारी परंपरा है, हमें जोड़ती है, हमें अलग नहीं करती है, हमें राजा और रंग नहीं बताती, दोनों को समान धरातल पर लाती है। ये सारे तत्व जो हमारे वैश्विक तत्व हैं, जो यूनिवर्सल एलिमेंट हैं, अगर हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इफ यू कैन इंट्रोड्यूस all these good quality that we had in the Sanatani परंपरा, मैंने ब्रीफ में बताया, टाइम अधिक लेने का है। मैं समझता हूँ कि 5 डेज वीक में हमारे बहुत सारे प्रोफेसर्स इन सारे तत्वों को बिहत आपको बताएंगे, और आई डू बिलीव दैट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड सो दैट we can frame such a syllabus in the modern education system that our student should not be deprived to get a good life, a life which will solve their problem and which will not create any problem for the others. We will create a society of harmony, society of love, society of respecting each other, and that is the society of इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, जहां पर कोई टेंशन नहीं था, टेंशन फ्री सोसाइटी, ब्लिसफुल सोसाइटी, हैप्पी सोसाइटी एंड पीसफुल सोसाइटी। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम, द मॉडर्न एजुकेशन। हम लोग मिलकर वी कैन फ्रेम द बेटर टुमारो, एंड बेटर टुमारो इज नॉट ए टुमारो ऑफ सेपरेशन, ए टुमारो ऑफ एसिमिलेटिंग ईच अदर। हम लोग एक दूसरे से मिलकर एक ऐसा परिवार बनाएं जहां पर ना मैं और हम का दूरी, हम लोग सब मिलकर एक हो जाएं, और एक में कहीं भी दूरी नहीं होती है, कोई अहम नहीं होता है। हम लोग विल बी द sons and daughters of such a universal spirit where we don't have, we are not divided on the basis of religion, caste, creed, language. We are one, and we will be one. Thank you very much. Thank you very much, sir. We are enlightened by your speech, sir. Now, in continuation, I would like to request our guest of honor,
Dr. Father Venike John, CSC Principal, Holy Cross College, for his words of blessings. Sir, please. Honorable Chief Guest, Professor Satya Putta, respected Director, Professor Prabhas Mahapatra, other professors, scholars, and dear participants, a very good morning. And I am here, standing here, I will not dare to give another exposition or lecture when we have our honorable Chief Guest, Professor Putta, sir, has given us so much insight and wisdom. Really, it was a joy to listen to you, sir. And I am here to express my sentiments and feelings in a few words. Really, I feel greatly honored today to stand in front of you because it is my privilege and my pride to acknowledge that what we have physically, though we had been collaborating, networking, we had many activities together, yet today this venture, faculty development program, collaboratively when we organized with the Central Sanskrit University and this young fledgling college, so to say, Holy Cross College, together in collaboration. It's a great moment of our coming together, as Sir gave us so many wisdom, insight into. It is no more we and they, or it is about ourselves. Education is nothing but trying to develop what is within us, the wisdom, the light that is given to every human being. That is education, trying to bring forth, that is the goodness, the divine that is within every individual. So therefore, ultimate goal of education is to, as Sir repeatedly mentioned, it is to liberate us, to make us blissful, happy, enlightened, joyful people, living for one another, giving our life the resources, enlightenment, wisdom, knowledge, all that we are imparted from higher above, is to share for the glory of the greater being and for our good of our brothers and sisters. So it is a great privilege and joy for us, especially a small college like ours, to be working together with the Central University, as maybe if everything goes well and with everyone's goodwill and collaboration, in future, Holy Cross College may grow into as a university, which could be also its full stature. But we are happy to be what we are doing as a small college because of the help of everyone in the scholars and professors all around and the authority, all that who have given us such a helping hand. We have done so far well. We are only 15 years as a college, higher education. We are in the school education more extensively as a community Holy Cross society. It's a great honor, we consider, that the openness that we have received from all of you here, beginning with our director, and then all of you, extending us a warm welcome to collaborate and network. We had also very few occasions, we had programs together, we came together. So we look forward to working together. So that is what we said. We are here to, more than giving, we are here to learn a lot more. Many departments like Department of History, Department of English, and others are in conversation. I know you are also networking and planning that, so that we can move together, sharing our knowledge, resources that is at our disposal. So I consider, on behalf of management from the Holy Cross College, I am very grateful. I express our great joy and happiness in working together and learning together and growing together. And I wish all the very best for this 5 days faculty development program, this very significant, very important effort that we have taken with this theme, strategies for assimilation of Indian knowledge system into modern education, may become a great success, and it may be our value and projects for the future and days to come. Thank you and have a good day. Thank you very much, sir, for your well wishes. This initiative actually a part of our MOU also that we have signed recently with Holy Cross College. Now, in continuation, I would like to request our resource person, Professor P.B.B. Subramaniam, respected Director of CSU Raghunath Kirti Campus, Uttarakhand. Sir will be addressing the participants on the topic Vedanga Jyotish and measuring time and calendar, weaving mathematics into beautiful poetry, Bhaskaracharya.
So I would like to request our resource person, Professor PVV Subramaniam, sir, Director CSU Raghunath Kirti Campus, to take the session. Sir, it's up to you now. I would like to request our technical team to support in this regard, please. श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे. Honorable Chief Guest, Professor Satyadev Poddarji, Guest of Honor, Dr. Father Benny K. John, Honorable Chairperson, Mahapatraji, and all the distinguished personalities and students who are present in this seminar hall. My hearty pranamas to all. First of all, I would like to congratulate the organizers for struggling to prepare a common platform for assimilation of IKS with the modern education system. And the organizers gave me a topic with bits. Though I try to focus on all those bits, I will keep in mind the timeline given to me also. It is about Bhaskara, and it is about mathematics, and it is about the calendars, and it is about the reckoning of time, and it is about the Vedanga Jyotish. Now we are struggling to assimilate the IKS with the modern education system, but it was not so in the past. So it happened in the medieval history, and in the past, we can find many things in indigenous disciplines. We find many things in the scriptures of Varahmihira. We find many things in the scriptures of Jyotish, or whatever we say, the scriptures related to Panchanga formation, or whatever it may be. We use it to share the knowledge. We use it to adopt the knowledge, and we use it to practice the knowledge of others also. And there was no such barricades in that time. Now we feel it. And now there is a strong need to assimilate it. Now let me go to the need of that time reckoning, and let me quote Acharya Bhaskara too in this connection. Everyone knows Acharya Bhaskara as a great mathematician. He elaborated many things, he proposed many things, he discovered many things, and he promoted many things. Yatra Vivahotsava Jatakadau Khetai Sputairev Phalasputatvam. It is the first verse of Spashtadhikara of Siddhanta Shiromani. Nowadays, we see so many arguments and confusions in the field of Jyotish. Some say we accept the Siddhanta, we accept the mathematics, and we don't accept the predictive astrology. And people accept Bhaskara as a mathematician, and at the same time, they don't wish to focus on the facet of Bhaskara, where he says that the prime object to calculate the true planets is to perform all these things. Yatra, Vivahotsava, Jatakadau, Hetaihi Sputaireva Phalasputatvam. We get the expected result only when we follow the time. It's also a verse of Bhaskara. So many a times we wish to wrap up, we wish to cover ourselves
to promote ourselves as mathematicians. As mathematicians. So now we have to, just to assimilate all these things, we have to go to the bottom. We have to understand at least the Bhaskara or understand the prime objects of time calculation. The prime object of Vedic knowledge is Ishtapurtihi Anishtapariharah. We have to promote the positive energy, and we have to avoid all untoward incidents or whatever it may be, which brings a negative energy or which brings a shallowness. So it is the prime object of Vedic knowledge. But at the same time, we wish to express ourselves that we follow the mathematics, but we don't follow the object of that mathematics. Ganitat siddhyate kalaha kale tishtanti devataha. Ganitat siddhyate kalaha. To recon the time, we need mathematics. And in Vedic knowledge, in Vedic literature, we clearly find that the calculation part, the mathematical part, took birth to recon the time only. And need of time reckoning is just to avoid untowardness of the time. So in this verse, the author says, Ganitat siddhyate kalah kale tishtanti devataha. Varamekahutih kale na kale koti sammitaha. We have to perform, we have to start, we have to initiate the work in time. When the time has no such divisions, then why should we follow the time? We can do anything at any time. But here Acharya says, Varam ekahutih kale, na kale koti sammitaha. If we perform, if we initiate the work in its time, a single ahuti, that is enough to get the result. And if it is not the time, then you may offer crores of ahutis. Then also you can get nothing. So we have to understand the nature of that time. I am not talking about that time which is neither has no beginning and nor it has any end. I am just talking about the time which can be calculated and which is related to a place, related to a particular place. We are just talking about the second nature of the time, that is Kalanatmaka Kalaha. Whether it is the Bhaskara, whether it is the Aryabhata, or whether it is the Varaha, all are concerned with the calculatable time only. And what is that time? That is related to a particular place, and which is a relative time. For example, at this point of time, the local mean time differs from place to place. So we cannot relate it to the Lokantakrita Kala. That means the endingless and beginningless time. We not at all can do anything with that time. It's not inferable. So inferable time is a fraction of that time, and it is completely related to a particular place. And in that place also, it is related to each and every stakeholder of that place. So let me go ahead. What Bhaskara expressed and what he tried to avoid. We don't get many Indian calendars which are prepared with the help of Bhaskara.
Bhaskara had that immense knowledge. Bhaskara's principles are used everywhere, and Bhaskara is praised for his in-depth knowledge of mathematics, and Bhaskara is praised for his in-depth knowledge of time calculation. And still, nowhere he is being followed to prepare the Panchangas. Some of the Bhaskara's principles give no results. It's not a conclusion, and it's not a find out. I am just focusing on that particular point, why people are not interested, or people are not following Bhaskara in preparing those calendars, or why people hesitate to follow Bhaskara. It may have two facets. The mathematical proportions, the mathematics, the formulas given by Bhaskara are not easy to understand. So a common man cannot accept them. Or in the second part, the conclusive results of Bhaskara's formulas are not matching with the other school of thoughts. It's a debatable issue. It's a matter of research. So I don't go in depth in this matter. Bhaskara knows about the precession of equinoxes, but he opted to be out of that area. He don't give a major portion. Bhaskara doesn't give any major portion in his work to the precession of equinoxes. It's a controversy nowadays, and it was in the time of Varahamihira also, and it gave a large gap, and it divided the society. And now, instead of a gap between the modern and IKS, we can experience a gap in between the people of IKS in the matter of calculation of Panchangas. They differ very much. And one of the points which make them differ from one to another is the precession of equinoxes. And after knowing very well, Bhaskara, when we go through the Siddhanta Shiromani of Bhaskara, we can understand that Bhaskara understands the universe very well. He understands the reckoning of time very well. And he proposes more than two theories for each and every problem. And still he avoided any elaboration on the precision of equinoxes. So it increases our curiosity why Bhaskara has done so. So because by the time of Bhaskara, this issue, this controversy grown to a big shape. And then now comes the second point. We say that there are one kalpa, there are two kalpas. The time of Brahma consists of so many kalpas. The Bhaskara came to a very simple conclusion. Yata srishtiresham dinado dinante layastesh satsveva tachara chinta. He simply says that I don't bother with this that Brahma. I don't bother with that all other kalpas. We have to be in the present time, and we have to calculate with the present system. It's the second thing which makes that works of Bhaskara and other traditional works. And in third one, in one school of thought,
they say that the whole process of genesis of universe took some time. That means the Brahma took some time. Whether it is the Brahma or whatever it may be, or whether it is the mathematical proportion which forces to the genesis of universe, it's all different things. When we discuss about the knowledge, the formation of universe takes some time, and it is described in other texts, but Bhaskara doesn't accept the same theory. He says that everything started at all. So I don't accept the starting of Kalpa and there is a time for Srushti. He says, I don't accept it. So it forces others to avoid Bhaskara in the matter of that practical, in the calculation of time. So it is the second point. And in third point, Bhaskara has immense knowledge of mathematics. He proposed so many new theories which are followed by the present day calculators. That is, one of them is the Udayantara Sanskara, the equation of time. Now both modern and in the astrophysics and as well as in the formation, in the calculation of Panchangas also, it is being used, but it is not so in other words. In this way, there are so many issues are there which are untouched. We need to get a way why such a scholar of mathematics with in-depth knowledge of time calculation and who knows the ultimate result of the same, and who himself says that the need of that calculation is to perform or initiate our assignments. Why such personality avoids that contemporary issues and those controversies? It's a big issue, and I am not focusing on the negative facet of Bhaskara. We cannot say it just to assimilate or just to make a research, just to make a collaborative study. We need to find a way what forced him, what happened. A person who made arithmetical formulas which are very famous all over the universe in the name of Leelavati, and the person who gave so many things in the name of Bijaganita, that is the algebra. It is well versed and translated to all the languages of the world. And the same person proposes that is in Ganitadhyaya, the calculation of time with the help of the longitudes of the planets, that is geocentric planets, and who has the capacity to explain the base of that geocentric theory. That is the just to calculate the relative time in respect of the Earth. That geocentric system was taken, and he explains very well in the Bhuvanakosha. He explains all those theories proposed in the Ganitadhyaya in the Gola, and even he describes how to observe those planets. And still he is not accepted, and he is not included in the discussions. A very well-versed poet. Indian astronomers are Bharatiya Jyotisha Grandhakaras. They don't show any strength in preparing the slokas, the verses. They cross the limits while presenting their Sanskrit text.
That means they don't follow the grammatical formulas or grammatical rules or whatever it may be. So they have all at present also the persons who perform, who follow, or who study, or who work in this field are known for their weak Sanskrit background. But it's not a matter with the Bhaskaracharya. His kavya, we can say it just as a kavya. We cannot find anything breaches the rules and regulations of formation of a sloka or a vakya or a shabda or a word. He clearly, at present, we have a controversy, that is Druksiddha and Parampara. It's actually promoted by us all. We promote it in ignorance, we have to say, because even Bhaskara proposes that Khetai Sputaireva Phalasputatvam Syatprotyate Tena Nabhascharanam Sputakriya Drugganitaikya Vedya. Sputakriya Drugganitaikya Vedya. He says that I am going to explain the corrections in the planets by which the planet calculated with mathematics and a planet observed in the sky, both will be same. And that planet that is the Druksiddha. That planet will only gives the optimistic result. So there was no such controversy in the textbooks of Acharyas, and there is no such controversy in the theories proposed by the Acharyas, but still we find that controversy all around us. Either we are in ignorance or we wish to ignore those Acharyas who has that splendid capacity to understand the universe. Finally, assimilation is not an impossible task, and we can find similarities in the roots. Knowledge was never barricaded on the grounds of nation, on the grounds of religion, or on the grounds of language, whatever it may be. We can clearly find such secular mindset in our acharyas, starting from whether it may be the Aryabhata, or whether it may be in the Vedanga Jyotisha, or whether it may be in the Bhaskara 1 or Bhaskara 2 or Varahamihira or Kamalakara Bhatta, whatever it may be. The interpretation is not in the lines of the perception of those acharyas, and we carry forward those interpretations which actually make us different from each other. So I don't wish to elaborate all these things. There is a strong need to understand the acharya. There is a strong need to integrate the school of thoughts at our place first. Then we have to find the similarities in other areas. And so much work has been done by the acharyas, and we failed at somehow we failed to carry forward those perceptions, carry forward those values, and carry forward those formulas. It's high time to get back to the roots, and roots are similar all over the world. Roots are similar all over the cultures, and now we are not perceive them in that in depth, and we are not perceive them in the context of knowledge.
we perceive them in other contexts. So knowledge should be respected first, and that should be bring to the forefront, and that should be accepted, and that should be promoted. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you all. Thank you very much, sir, for your enlightening speech. Now, in continuation of the same, I would like to request our chairperson, Professor Prabhat Kumar Mahapatra, Director, Central Sanskrit University, Ecolab Campus, to grace the audience. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। परम सम्माननीय एमबीबी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, आचार्य सत्यदेव पोद्दार महोदय, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित होली क्रॉस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर FR बेनी के जोन महोदय और उपस्थित सभी विद्वद्गण हमारे परिसर से एवं होली क्रॉस कॉलेज से, और उपस्थित सभी छात्रगण, और विशेष करके इनवाइटी गेस्ट के रूप से और रिसर्च पर्सन के रूप से उपस्थित प्रोफेसर सुब्रमण्यम जी, निर्देशक रघुनाथ कीर्ति परिसर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रघुनाथ कीर्ति परिसर हरिद्वार के। आज हमारे ये जो 5 दिन का कार्यक्रम है, कार्यशाला है, इसमें स्ट्रेटेजिक फॉर असिमिलेशन ऑफ IKS विथ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इसमें 2 चीज है। एक तो हमारा रणनीति है जिसके साथ सम्मिलित है, क्या ना, IKS के साथ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम सम्मिलित करना है। अर्थात IKS है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, उसके साथ जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे सम्मिलित किया जाए, इस विषय में हमारे पोद्दार सर ने बहुत कुछ कहे हैं। मैं उनको भी पहले से कहा था कि आप इस विषय में आप ज्ञानी है, आपके ज्ञान के परिसीमा में ये विषय आता है, क्योंकि इतिहास के साथ हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा जुड़ा है और सारे इतिहास के हैं, इतिहास विभाग के। और ये जो विषय है, मैं इसमें थोड़ा सा 2-4 विषय उपस्थापित करूंगा। जो हमारे मैं तो एक ज्योतिष का छात्र हूं, ज्योतिष के विषय को लेकर मैं कुछ उपस्थापन करूंगा। जैसे ही प्लानिटरी मोशन से है, प्लानिटरी मोशन से उसमें कहा गया है कि कक्षा प्रतिमंडलगा भ्रमंति सर्वे ग्रहा सोचारेण मंदोच्चात अनुलोमंग प्रतिलोमंग चैव शीघ्रोच्चात। मान ऐसे ही जो कक्षा में जो ग्रह मूवमेंट कर रहा है, ये जो कक्षा में ग्रह मूवमेंट कर रहा है, ये आज के विज्ञान नहीं कहा है, उस समय में कहा गया है। आज के विज्ञान भी यही विषय कह रहा है, कक्षा में घूम रहा है। कहीं अनुलोम विलोम में भी, जैसे ही कभी कभी उच्च नीच में भी ग्रह, जैसे ही हमारा एक पाथ पड़ा है, जैसे हमारा रोड है, रोड में गाड़ी चल रहा है, कभी तो रोड तो पूरा समान नहीं है, फ्लैट नहीं है, फ्लैट में तो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। ऐसे ही ग्रह भी जब कक्षा क्रम में भ्रमण करते हैं, तब वहां भी उच्च नीच होता है, आगे पीछे होता है। और हमको भी ग्रह कभी कभी दिखता है कि बकरी ग्रह, हम कहते हैं कि ये शनि बकरी है। हाँ, हम कभी कभी कहते हैं ना शनि बकरी है, लेकिन बकरी क्या है, एक्चुअली बकरी नहीं है। बकरी मीन्स माने थोड़ा पीछे, बैकवर्ड मूवमेंट जिसको कहते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट ग्रह नहीं करता है। कब क्या है, हम जब ट्रेन में जाते हैं, जब हमारा जो पौधा सब है ना, हमको दिखता है कि पीछे पीछे जाता है। ऐसे ही हमको दिखता है कि ये बकरी है, पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये एक माने आभास, जैसे ही पता लगता है कि ये पीछे जा रहा है। ग्रह अपने स्थान पे, अपने ये में गति में आगे आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका जब मोशन स्लो हो जाता है, तब हम लोग को हमारा स्पीड के अनुसार वो हमको दिखता है कि ये बैकवर्ड मूवमेंट करता है।
तब ये सब विषय जो है ये हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा में है, वो उसी ज्ञान को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत सरकार ने उसको विशेष करके भारतीय ज्ञान परंपरा को जो भारतीय शास्त्र हैं शास्त्रों को आगे बढ़ाने के लिए उस विषय जो विषय कहा गया है उस विषय को आगे बढ़ाने के लिए ये एक पद्धति दिया है कि आप पढ़िए, पहले भारतीय ज्ञान परंपरा को जानिए, उसके बाद आगे आइए। आप जो कह रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि ये आज ये नया चीज उद्भावन हुआ है बा आविष्कार किए हैं, नया चीज आविष्कार किए हैं, जो आविष्कार किए हैं ये पहले है, हम उसको हम जानकारी नहीं था, जानकारी यदि था तो हम हमारा संस्कृत ज्ञान इतना नहीं था। जब संस्कृत ज्ञान होता था तब तो हम समझ सकते थे। मैं एक विषय उपस्थापन करूंगा, ये ऑर्बिटिंग ऑफ प्लैनेट्स में एक भास्कराचार्य ने कहे, सर अभी सुब्रमण्यम सर इसको व्याख्या कर रहे थे, मैं उसी में इस सिद्धांत शिरोमणि से एक विषय कहूंगा। आकृष्टि शक्तिश्च मही तयाजत हस्थम गुरु स्वाभिमुखम सुशक्त्या आकृष्यते तत् पततीव भाति समय समन्तात को पततीव खे। माने आकाश में क्या होता है, जैसे ही कोई भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है। ये विषय को, ये जो ग्रेविटेशन थ्योरी को उसको कहे हैं न्यूटन ने कहे हैं, उसमें शो फॉर न्यूटन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी acting between the earth and other object is directly proportional to the mass of earth, directly proportional to the mass of the object, and inversely proportional to the square of the distance which separate the centers of the earth and the objects। माने ये जो ये खिंचता है, ये विषय पहले कहें भास्कराचार्य द्वादश शताब्दी में कहे हैं, 11th to 12th सेंचुरी के अंदर उनका समय था जिस समय में वो कहे हैं अपने ये में। लेकिन हम न्यूटन ने उसके बाद कहे हैं, जब वो कहे हैं तब उसको हो गया कि हमारा उसको वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा भास्कराचार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का योग्यता इनके पास था। लेकिन उसमें एक डिफरेंस है, जो न्यूटन और हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के भास्कराचार्य उसमें यही लिखे हैं कि F इजिकल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। उनका जो फॉर्मूला के हैं वही फॉर्मूला वो नहीं किए थे, वो यदि फॉर्मूला कर देते तब ये न्यूटन के ऊपर चले जाते। तब ये भारतीय ज्ञान परंपरा हर समय में समृद्ध है। सर तो बहुत कुछ कहे, मैं तो सुन सुन के और मैं मेरे पास रहा नहीं कुछ कहने के लिए। लेकिन और भी एक जो जीरो थ्योरी है, जो जीरो थ्योरी उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहे हैं, वी ओwe ए द लॉट टू इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट विदाउट व्हिच नो वर्थ, जिसका मूल्य नहीं है उसके साथ हम कैसे काउंट कर सकते हैं। आप देखिए 5 से माइनस करेंगे 6, 5 से 6 माइनस करेंगे तो -1 होता है। तब उसमें उसी बीच आ रहा है जीरो भी आ रहा है, उसी के बीच में जीरो भी आ रहा है। तब ये जो जीरो थ्योरी है इसको इतना आसान नहीं है, जीरो थ्योरी को हम प्रतिपादन करने में इतना आसान नहीं है। लेकिन ये भारतीय परंपरा में जो हमारे आचार्य ने उसको ही प्रतिस्थापित किए हैं। तो इतना कितना विषय, कितना सुंदर विषय हमारे पास है जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है हम उसमें उसको शामिल करेंगे तो हम कुछ भी कह देंगे। ये जो जोग का सर ने कह रहे थे, जैसे ही ब्रह्ममान के ऊपर कहे कि वो तो बहुत बड़ा है, ब्रह्ममान के ऊपर जाना है। ब्रह्ममान के अभी ब्रह्मा को जैसे ही हम संकल्प वाक्य में कहते हैं ना, ब्रह्मण द्वितीय परार्धे, ब्रह्मण द्वितीय परार्धे मीन्स क्या है, ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध है। द्वितीय परार्ध अर्थात 100 में आधा, 50 ईयर्स ब्रह्मा का पूर्ण हो गया है, अभी 51 ईयर्स चल रहा है ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा का एक ईयर पूर्ति होने के लिए कितना समय लगता है वो भी कल्पना करना है, वो ऐसे ही कितने ब्रह्मा गए वो भी कल्पना करना है। तब ये यदि हम उसको कैलकुलेट करेंगे समय के हिसाब से, हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा ये सूर्य सिद्धांत से कहा है, जो आर्ष ग्रंथ हमारा है, और सिद्धांत शिरोमणि में कहे हैं, सिद्धांत तत्व विवेक में कहे हैं, पंच सिद्धांतिका में कहे हैं, कितने ग्रंथ में ये सब विषय कहा गया है। जैसे ही हम एक काल गणना करते हैं ना, उसमें सूक्ष्म काल भी है। जैसे ही एक पद्मपत्र में एक सुई को
ये करेंगे तो जितना समय लगेगा वो एक काल होता है, वो काल को कोई पकड़ पाएगा? जो सूक्ष्म काल है, अति सूक्ष्म काल है, जो सूक्ष्म जो हम हमारा विचार में आ सकता है, तब ये काल को हम ले सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। वेस्टर्न कंट्री में 24 आवर्स दिया गया है, एक सूर्योदय से एक सूर्योदय तक। 24 आवर्स मैंने डिवाइडेड बाय 24, एक डे को, पूरा डे एंड नाइट को 25 डिवाइडेड बाय 24। हमारा क्या है, हमारा परंपरा में हम लिए हैं 60 घटी, एक सूर्योदय से दूसरा सूर्योदय तक 60 घटी, 60 घटी। तब 60 घटी सूक्ष्म है कि आपका ये सूक्ष्म है? ये बताइए। मैंने ये एकदम सत्य है, तो मैंने नेकेड ट्रूथ है, ये सत्य है। आप देख लीजिए, एक स्केल है, स्केल तो उसका तो एक ही साइज है ना, उसमें वो 30 सेंटीमीटर है, और भी 12 ये है, इंच है। इंचेस और ये में देखिए कितना डिवाइड, कौन कौन सही होगा? तब जितना डिवाइड करेंगे, ऐसे ही हमारा जो पंचांग में सर तो कह रहे थे, हमारे सुब्रमण्यम सर, पंचांग की गणना में एक भास्वती गणना है, उनको सतानंद ऋषि उनको लिखे हैं। उसमें देखिए माने सब 100 में डिवाइड है, सब डिवाइड 100 में। मैं उसका गणना करता हूं, मैं जानता हूं, उसमें सब में 100 में डिवाइड है। जब 100 में डिवाइड करेंगे, तब तो जितना अधिक गणित में जितना आप डिजिट अधिक लेंगे, तब उसका सूक्ष्मता बहुत अच्छा ही होगा। ऐसे ही जो ये चला है, परंपरा चला है हमारा, ये तो 5 दिन का वर्कशॉप चलेगा, और सर के करकमल में, हमारे पोद्दार सर के करकमल में उद्घाटन हुआ है। मैं आशा करता हूँ निश्चित रूप से हमारे जो प्रतिभागी ऑनलाइन में रहेंगे, जो ऑफलाइन में रहेंगे, सभी के लिए उत्कृष्ट होगा, एवं सभी उपकृत होंगे, और विशेष करके हमारे छात्र भी उसमें उपकृत होंगे। ये बहुत जरूरी है। आज के प्रासंगिकता ये रहता है कि निश्चित रूप से ये सभी के लिए जरूरी है, सबको जानकारी लेना है। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ के और तर्जमा करके और उसके ऊपर गवेषणा करके आगे बढ़ सकते हैं। इतने कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। Thank you very much, sir. Around 40 participants have registered for this FDP-Com national workshop, sir. And already 26 participants have joined through virtual platform, and other participants are there offline mode also. And we have selected only Shiksha Shastra second year students, B.Ed second year students for offline mode, because they are our future teachers. And for that one, we have given them priority for this. Now, in continuation, I would like to request for a vote of thanks, Mr. Balaram Das, Assistant Professor of Political Science, Central Sanskrit University, Akalapa campus. Very good afternoon, all present here. 5 दिन व्यापी IKS के ऊपर जो नेशनल वर्कशॉप का आज सुबह उद्घाटन हुआ है, उस कार्यक्रम का हम अंतिम चरण में आके पहुंचे। इस अंतिम चरण में मैं बलराम दास धन्यवाद देने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर सत्येंद्र पुद्रा, वाइस चांसलर MBB यूनिवर्सिटी। सर, आपने अपना बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हमारा बीच आपने आए, और आपने हम लोगों को बताया किस लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहिए, जिससे निश्चिंत ही हम सभी ने उपकृत हुए। इसलिए सर, आपको हमारी पूरा समिति की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र। सर, आपका डायरेक्शन की और आपका निर्देश की वजह से हमारा जो ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ। सो सर, आपको भी हमारा समिति की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर फादर बेनी कुमार जॉन। सर, आपने सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया, जिसका फलस्वरूप आज ये कार्यक्रम यहाँ पर शुभारंभ हुआ। सो सर, आपको भी हमारा पूरे समिति की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसके बाद मैं
धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर पी भी सुब्रमण्यम, डायरेक्टर CU2 रघुनाथ कीर्ति कैंपस। सर ने हम लोगों को एंशियन इंडिया में जो मैथ था उसका जो क्या वैल्यू है वो हम लोग को समझाया, जिससे हम सभी उपकृत हुआ हो। इसके लिए सर आपको भी हमारा समिति की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ यहाँ पर बैठे हुए सभी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट एवं ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट, आप सभी को मैं समिति की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Heartfelt gratitude to Mr. Balaram Das, sir, also Assistant Professor of Political Science, for both of things. Now, with permission of the chair and with the permission of all the dignitaries and guests, we would like to end this session with Shanti Mantra. So I would like to request all of you to join Shanti Mantra. Om, Om Sarve Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Namaskar. We will have our second session for online participants. We will have our second session tomorrow onwards. At 11 a.m. onwards, we will continue our second session. So I would like to request all the participants, those who have joined through virtual platform, to attend the second session also. We will share one online feedback form in your WhatsApp group. Thank you very much.